Hello children, how are you? I hope you all saw my first video of poem First Day at School and hope you were enjoyed it. Okay. And students, did you complete your exercise portion of the poem First Day at School which was uploaded on the website? Okay, complete it, okay? Now, this is our second video for you all and it is for class 2 English, lesson 2 Haldi's Adventure. And students, underline the words that is new to you, okay? Now, before we start, tell me one thing. Have you ever been to zoo? Yes? Okay, wow, that's great. Did you enjoy there? Tell me. Which animal did you see there? Can you tell me their names? Oh, there you have seen a lion. Wow. Monkey. You have seen a tiger also. Oh, you saw a giraffe there? Very good. Okay, students. Now tell me, have you ever thought using a giraffe for moving one place to another? No, na? I also never thought about this. But this is a story of a girl whose name was Haldi. And what kind of adventure happened to her while going to school? We will see in the story. Are you ready for that? Yes? Okay. Let's go to the story. Haldi's adventure. One morning, as Haldi walked to school, she met a giraffe. The giraffe wore big glasses and held a book in his hand. He smiled and said, "Good morning, Haldi." Now, here, one morning as Haldi walked to school, जब वो एक सुबह स्कूल के लिए निकलती है तो वो किससे मिलती है? She met a giraffe. जिराफ से मिलती है. Here we have new word giraffe. Underline this. Giraffe means a tall animal with a very long neck and 4 legs. Okay. Now the giraffe wore big glasses. जिराफ ने क्या पहना हुआ था? बड़ी बड़ी ग्लासेस यानी बड़े बड़े चश्मे लगाए हुए थे. एंड हेल्ड अ बुक इन हिज हैंड और हाथों में बुक्स थे. उसके हाथों में किताबें थी. ही स्माइल्ड एंड सेड, "गुड मॉर्निंग हल्दी." वो मुस्कुराते हुआ क्या बोला? गुड मॉर्निंग हल्दी. ओके. Now, in this story, there was a girl whose name was Haldi. One day, when she was going to school, suddenly a giraffe came in front of her, who was wearing big glasses and held a book in his hand. Now, after that, Haldi looked up at him. "I'm sorry to stare," she said. Haldi looked up at him. हल्दी उसको देखती रहती है और क्या कहती है? आई एम सॉरी टू स्टेयर. तुम्हें घूरने के लिए. हियर स्टेयर मीन्स घूरना. मुझे माफ़ करना, मैं तुमको ऐसे देख रही हूँ या ऐसे घूर रही हूँ, है ना. बट आई हैव नेवर मेट अ जिराफ लाइक यू. लेकिन मैं कभी भी तुम्हारे जैसा जिराफ पहले कभी नहीं देखी. ओके. नाउ Haldi was shocked and kept staring at the giraffe for a while. Then she told him that she had never met a giraffe like him. Then after that, "My name is Smiley." Who said? Yes, said the giraffe. My name is Smiley. Giraffe ने क्या बोला? मेरा नाम Smiley है. Whenever you see me, you will smile. जब भी तुम मुझे देखोगी, मैं स्माइल करता हुआ ही दिखूंगा और तुम भी स्माइल करती हुई मुझे देखोगी. Whenever you see me, you will smile. जब भी तुम मुझे देखोगी तुम स्माइल करोगी. ओके. Now, then the giraffe told her that his name was Smiley. Haldi was surprised and happy meeting after Smiley. Now, Haldi was surprised and happy too. Haldi surprised. Here surprised means amazed. Underline this. Surprised. Yes, surprised means amazed. Then she remembered
दैट शी वुड बी लेट फॉर स्कूल, और उसे सडनली मीन्स अचानक से याद आता है कि वो स्कूल के लिए लेट हो रही है. सो शी सेड टू द जिराफ, वो जिराफ से कहती है, आई वुड लव टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करने में बहुत दिलचस्पी रखती हूँ, मैं ज़रूर तुमसे बात करती, बट लेकिन आई मस्ट रश टू स्कूल और आई विल बी लेट, मुझे जल्द ही स्कूल के लिए निकलना पड़ेगा, नहीं तो मैं लेट हो जाऊँगी. मीन्स suddenly she remembered that she was getting late for school. The giraffe told her to sit on her back after that, है ना. The giraffe said, not if you ride on my back, if you climb on my back, I will run so fast that you will feel you are flying to school. Then after that, what the giraffe said, not if you ride on my back, तुमको स्कूल में देरी नहीं होगी अगर तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओगी. इफ़ यू क्लाइंब ऑन माई बैक, आई विल रन सो फास्ट दैट यू विल फील यू आर फ्लाइंग टू स्कूल, मैं इतनी तेज दौड़ूंगा कि तुमको ऐसा लगेगा कि तुम हवा में उड़ रही हो स्कूल जाने के लिए. डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, और तुम रोज स्कूल जाती हो. ओके, नाउ आफ्टर दैट Giraffe asked her so many questions, है ना, like yes said Haldi. Haldi said yes, I go to school on Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays and Fridays. On Saturdays I play games at school. मैं रोज स्कूल जाती हूँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे. ऑन सैटरडेज, और मैं सैटरडे को आई प्ले गेम्स एट स्कूल, और मैं सैटरडे को गेम्स खेलती हूँ स्कूल में. ओके. Now Giraffe asked her so many questions like does she goes to school every day, what does she learn, etc. Now after that, what do you do in school, asked the giraffe. I learn about the stars, the trees, the birds and the animals. What do you do in school, who asked? Yes, Giraffe asked her. जिराफ क्या पूछता है, तुम स्कूल में क्या करती हो. तो हल्दी क्या कहती है, आई लर्न अबाउट द स्टार्स, मैं स्टार्स के बारे में पढ़ती हूँ, ट्रीज़ के बारे में पढ़ती हूँ, बर्ड्स के बारे में पढ़ती हूँ और एनिमल्स के बारे में पढ़ती हूँ. नाउ आफ्टर दैट इज़ गुड सेड द जिराफ. क्या बोला जिराफ ने, दैट इज़ गुड, ये अच्छा है. आई लव बुक्स टू, मुझे भी बुक्स बहुत प्यारे हैं, है ना, उसे भी पढ़ना बहुत अच्छा लगता था. किसको, जिराफ को. दे आर लॉट्स ऑफ फन, है ना, मीन्स बुक्स आर हैविंग लॉट्स ऑफ फन. नाउ जंप ऑन माई बैक, आई विल टेक यू टू स्कूल. फिर जिराफ ने क्या, नाउ जंप ऑन माई बैक, अब मेरे पीठ पर आके बैठ जाओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुमको स्कूल ड्रॉप कर देता हूँ या स्कूल छोड़ देता हूँ. Then after that, Haldi climbed on the giraffe back. While going to school, she saw so many beautiful things when she reached the school. Then, and before she knew it, she had reached the school playground. जैसे ही उसे सब कुछ पता चलता, वो स्कूल के प्लेग्राउंड में पहुंच गई. मीन्स हल्दी then jumped on the giraffe's back and found that she could see so many things from the top. और उस जैसे ही वह स्कूल की तरफ जा रही थी, उसे बहुत सारी चीज़ें ऊंचे में मीन्स टॉप पे बैठकर, जिराफ की पीठ पर बैठकर बहुत सारी चीज़ें दिखी. एंड बिफोर शी न्यू इट शी हैड रीच्ड द स्कूल, ये सब जितना जान पाती उसके पहले वो स्कूल पहुंच गई. देन स्कूल के प्लेग्राउंड में पहुंच गई. शी क्लाइम डाउन, फिर वो नीचे उतर गई. व्हेन शी टर्न बैक टू थैंक द जिराफ, शी फाउंड दैट ही हैड गॉन अवे. जैसे ही वो पीछे की ओर मुड़ने के लिए की कि वो जिराफ को थैंक यू बोलेगी, तो उसने क्या पाया कि जिराफ तो जा चुका है. नाउ आफ्टर दैट शी केम डाउन फ्रॉम द बैक ऑफ द जिराफ एंड व्हेन शी टर्न बैक टू थैंक द जिराफ, शी फाउंड दैट ही हैड गॉन अवे. ओके, नाउ इन दिस स्टोरी देयर वाज अ गर्ल हुज नेम वाज हल्दी. One day when she was going to school, suddenly a giraffe come in front of her, who was
wearing big glasses and held a book in his hand. Haldi was shocked and kept staring at the giraffe for a while. Then she told him that she had never met a giraffe like him. Then the giraffe told her that his name was Haldi. Haldi was surprised and happy meeting after Smiley. Suddenly, she remembered that she was getting late for school. The giraffe told her to sit her on his back and he will drop her at school so that she will not be late. After this, the giraffe asked her so many questions like does she goes to school every day, what does she learn at school, etc. After that, Haldi climbed on the giraffe's back while going to school. She saw so many beautiful things. When she reached the school, she come down back of the giraffe, and when she turned back to thank the giraffe, she found that he had gone away. After that, Haldi said, means Haldi's thought, oh Haldi thought, what a wonderful adventure I have Haldi had. Okay, what a wonderful adventure I have had. कितना ही wonderful है ना. Wonderful means extremely good. Adventure means an exciting and daring experience, है ना. तो कितना ही ज़्यादा exciting experience था. Okay. Now, this was a wonderful adventure for Haldi. I hope you understood and enjoyed the story of Haldi. Okay. Now here, new words. As I told you, giraffe means a tall animal with a very long neck and 4 legs. Surprised means amazed. Adventure means an exciting and daring experience. Wonderful means extremely good. Playground means an outdoor area for children to play. Okay students, like earlier, this time too, exercise will be soon uploaded on the school website. Okay. Now, thanks to all. Have a nice day. Goodbye.